हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलियो अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एलियो अपडेट पे एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है। इस एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ में आपको 500 प्लस एमसीक्यूज़ अलॉन्ग विद प्रीवियस 5 years क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड टू अवेल दिस कंटेंट इन पीडीएफ फॉर्म यू विल हैव टू subscribe to our YouTube channel and download a mobile app from the Google Play Store। आपको क्या फ़ायदा मिलेगा एलियो अपडेट को ज्वाइन करने से? सबसे पहले यू विल हैव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। एलियो अपडेट के मोबाइल ऐप से, एलियो अपडेट के एप्लीकेशन से आपको एक्सेस मिलेगा हमारी लाइव क्लासेस में, जिसमें हम आपको आपके कोर्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेन एक्सेस टू हाई क्वालिटी नोट्स। उन नोट्स के आगे आपके एग्ज़ाम्स में, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं आएगा। These are trusted notes from the trusted educators of Elio Update and there will be unlimited doubt clearing। आपके जब भी कोई भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपके ऑन द स्पॉट क्लियर किए जाएंगे by our educators and all this will be available to you the moment you download and subscribe to our application on Google Play Store। Along with that, do subscribe to our YouTube channel, share our videos and boost your exam preparation। Now we shall start with the exam booster for BCom 6th semester, part 2 of Income Tax Act। Now the very first question that we have is question number 1. The period of 12 months commencing on the first day of April every year is known as? Your options are option A previous year, option B accounting year, option C assessment year and option D financial year। So period of 12 months commencing यानी कि start होना। So 12 months का वो period जो first day of April, that is 1st April को start होता है हर साल, उसे हम किस नाम से जानते हैं? Now if you have subscribed to our YouTube channel and have डाउनलोडेड अ मोबाइल ऐप, तो आपको क्लासेस में ये बताया गया था कि 1st अप्रैल टू 31st मार्च, इस टाइम पीरियड में आप जितनी भी अर्निंग्स करते हैं, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। इस टाइम पीरियड में जितनी भी अर्निंग होती है उसी के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज द असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2023 की बात लेते हैं, सो 1st अप्रैल 2023 टू 31st मार्च 2024 आप जितनी भी इनकम अर्न करते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स गेन करते हैं, उन सब के ऊपर आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 1st अप्रैल 2024 टू 31st मार्च 2025 में, दैट इज द असेसमेंट ईयर, उसमें आप टैक्स पे करेंगे। सो the year, the financial year immediately preceding the assessment year is known as option A, the previous year। So your correct answer is the period of 12 months commencing on 1st of April every year is known as option A, previous year। The next question is question 2. The definition of income is, अब income का जो definition Income Tax Act 1961 में दिया गया है वो किस प्रकार का है? दैट इज ऑप्शन ए इंक्लूसिव, ऑप्शन बी एग्जॉस्टिव, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी सिंपल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट 1961? आपके इनकम की डेफिनेशन में इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स दिए गए हैं। दीज हेड्स आर इनकम फ्रॉम सैलरीज, income from house property, income from profits and gains of business and profession, income from capital gains and income from other sources। So there are 5 heads of income। Income Tax Act में income की definition में 5 heads provide किए गए हैं। So all the incomes and earnings from all these 5 heads taken together amount to income as defined in Income Tax Act 1961। So the definition of income is option A, inclusive, because it includes these 5 heads, which are income from salaries, income from house property, income from capital gains, income from profits and gains of business and profession, and income from other sources। So the definition of income is inclusive।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स। अब एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? कोई भी इनकम जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज is generated is known as agricultural income, but there are some income which are generated from land but they are not treated as agricultural income. मतलब वो इनकम जो लैंड एक्टिविटी से ही जनरेट हो रही हैं बट उनको एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो वो कौन सी इनकम्स होती हैं? सो योर गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम फिशरीज, ऑप्शन सी इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो income from self-grown grass is not treated as agricultural income. Income from fisheries, this is also not treated as agricultural income, and income from mining royalties is also not treated as agricultural income. So all of these are the incomes which are not treated as agricultural income, but the income is generated from land or natural processes. So the correct answer is option D, all of these. Next question is income tax is levied on those individuals, यानी income tax किन individuals के ऊपर levy किया जाता है? Your option are whose income is less than the exempted limit in any previous year. यानी कि पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स उन लोगों पे लेवी किया जाता है जिनकी इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट से कम है इन द प्रीवियस ईयर। Option B, whose income is more than exempted limit in any previous year. So the next option is income tax उन लोगों पे लेवी किया जाता है जिनकी इनकम exempted limit से ज़्यादा है in the previous year. Option C is whose income is up to 32,45,000 in any previous year. And option D, whose income is up to 2,50,000 in any previous year. So let's talk about option 1. वो इंसान जो exempted limit से कम पैसा कमा रहा है, क्या उसके ऊपर इनकम टैक्स लेवी किया जाएगा? So this is completely wrong. exempted limit से कम या exempted limit तक अगर आपकी annual earning है किसी भी previous year में, you have to pay zero tax to the government, zero income tax to the government. ऑप्शन बी, कोई भी इंसान अगर एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा पैसे कमाता है इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्या वो इंसान इनकम टैक्स पे करेगा? तो जी हाँ, इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन दोज इंडिविजुअल्स हुज इनकम इज मोर देन द एग्जेम्प्टेड लिमिट इन द प्रीवियस ईयर. Next is option C, whose income is up to 32,45,000 in any previous year. So this is also wrong. आपकी इनकम अगर 32,45,000 तक है, गिवन लिमिट इसमें दे रखी है, so this is wrong. अगर exempted लिमिट से ये पैसा ज़्यादा है तब तो आप इनकम पे करेंगे, but that doesn't mean कि सिर्फ यही लिमिट कंसिडर की जाएगी. The main limit to be considered is the exempted limit. अगर आपकी अर्निंग एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है तभी आपके ऊपर इनकम टैक्स लेवी किया जाएगा. एंड द सेम गोज विद ऑप्शन डी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन दोज इंडिविजुअल्स हुज इनकम इज मोर देन द एग्जेम्प्टेड लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर. एंड बाय एनी प्रीवियस ईयर इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स. अब प्रीवियस ईयर का क्या मीनिंग होता है? सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर. यानी वो फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर से ठीक पहले गुजरा हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2023 का एग्जाम्पल ले, सो 1 अप्रैल 2023 1 April 2023 to 31st March 2024. 1 April 2023 to 31st March 2024 ये आपका फाइनेंशियल ईयर था
जिसमें आपने इनकम अर्न की. नाउ यू हैव टू पे द टैक्स ऑन 1st April 2024 to 31st March 2025 for the income earned in the previous year, in the previous financial year. ओके जो भी इनकम आपने 1st April 2023 to 31st March 2024 अर्न की है, उसका ऊपर जो आप टैक्स पे करेंगे, उसका असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स आप 1st April 2024 to 31st March 2025 में करेंगे. सो this is known as previous year. That means the financial year immediately preceding the assessment year is known as previous year. So the correct option is option A, financial year. Next we have income tax is computed on. So income tax किसके ऊपर compute किया जाता है? Your options are capital, option B fixed assets, option C income and option D business gains. So income tax में income tax act 1961 में आपका income tax आपकी income के ऊपर compute किया जाता है. जो income आप earn करते हैं during the financial year और प्रीवियस ईयर उस पे आप टैक्स पे करते हैं. सो इनकम क्या इंक्लूड करता है? इनकम की जो डेफिनेशन है उसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम आपको प्रोवाइड किए गए हैं. इन्हीं 5 हेड्स के अंदर आप जो भी इनकम और प्रॉफिट और गेन्स अर्न करते हैं, इनको क्यूमुलेट करके इनकम टैक्स एक्ट आपको आपकी इनकम बताता है जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं. सो ये कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, बिजनेस गेन्स, ये सारी चीज़ें आपकी एक ही चीज़ में क्यूमुलेट होती हैं, दैट इज इनकम, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इनकम. इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन इनकम विच इंक्लूड्स ऑल दी हेड्स, ऑल दीज 5 हेड्स. और ये 5 हेड्स हैं आपके इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस गेन्स एंड प्रॉफिट्स, a profession, income from profession and business gains, income from house property and income from other sources. So the next question is the period of assessment year is. अभी तक हम previous year की बात कर रहे थे. Now what is the time period of assessment year? So your options are option A 1st January to 31st December, option B 1st April to 31st March, option C 1st April to 31st December and option D 1st July to 30th June. So जैसा कि आपको प्रीवियसली बताया गया है कि आपका जो प्रीवियस ईयर होता है, इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर एंड योर प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April to 31st March. Now this is your previous year, but this is also your financial year and this is the assessment year as well. अब कैसे? 1st April to 31st March किसी भी साल का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होता है. एंड सपोज अगर आपने 23 का एग्जाम्पल लिया है, 2023 का, so 1st April 2023 to 31st March 2024 is the financial year or previous year. For the assessment year 1st April 2024 to 31st March 2025. So 1st April 2023 to 31st March 2024 इस प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर हो जाता है आपका 1st April 2024 to 31st March 2025. बट ठीक इसी तरीके से 1st April 2022 to 31st March 2023 was the previous year for the assessment year, that was 1st April 2023 to 31st March 2024. So कोई भी financial year
प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर माना जाता है. So according to that, your correct answer is option B, 1st April to 31st March. It is also the previous year, financial year and the assessment year. Now let's move on to next question. Income tax was levied in India first by the following. So India में income tax act को किसने लेवी किया था for the very first time? Your options are Sir James Wilson, Sir James, option C Sir Newton and option D Sir Lucas Paciolo. Now जो हमारी क्लासेस हैं लाइव क्लासेस उनमें ये चीज़ आपको डिटेल में समझाई गई है that income tax in India was levied by Sir James Wilson after the revolt of 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो भी लॉसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस की वजह से हुए थे उन लॉसेस की रिकवरी के लिए इनकम टैक्स को लागू किया गया था इन इंडिया एंड द आइडिया was proposed by Sir James Wilson or the tax was levied in India by Sir James Wilson. अब revolt of 1857 is also known as the first revolt of independence. During this time Britishers को काफ़ी ज़्यादा losses face करने पड़े थे at the hands of the Indians और उन्हीं losses को recover करने के लिए they decided कि ये सारे losses Indians ही उनको pay करेंगे and to compensate their losses they faced by the Indians उन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट को लागू किया था एंड द पर्सन बिहाइंड इट वाज ऑप्शन ए सर जेम्स विल्सन who was also the first finance minister of India, British India. Next we have another question, that is exemption limit for assessment year 2020 to 21 for a non-resident individual is. Now assessment year 2020 to 21 इसमें एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए क्या एग्जेम्पशन लिमिट प्रोवाइड की गई थी. सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 71,50,000, ऑप्शन बी 1,60,000, option C 2,50,000, and option D 2,20,000. So according to assessment year 2020 to 21 the exemption limit for a non-resident individual was option C 2,50,000. Next question, in case of a women assessee, her agricultural income is of rupees 20,000 shall be included in her total income when it is more than the following limit. अब in case of women assessee, अगर आपकी assessee कोई female candidate है, if your assessee is a female or a woman, उसकी agricultural income 20,000 रुपये है, तो उसकी agricultural income को हम लोग इनकम टैक्स में यानी कि टोटल इनकम में जिसके ऊपर वो टैक्स पे करेगी उसमें कब ऐड करेंगे, जब वो एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करते हैं. सो द options we have are 1,35,000, 1,10,000, 2,50,000 and option D 2,25,000. So the correct answer according to Income Tax Act 1961 is option C rupees 2,50,000. अगर किसी भी विमेन एसएसए की टोटल इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, 2,50,000 से एक्सीड कर जाती है, ऐसे केस में उसकी जो 20,000 की एग्रीकल्चरल इनकम है इसको भी हम लोग टोटल इनकम में ऐड करेंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. सो जो भी नॉर्म्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम and manufacturing and growing of tea or the cultivation of tea in India, उनके अकॉर्डिंग
अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम, अगर हमको टी मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोइंग या कल्टीवेशन से इंडिया में अर्न होती है, तो उसको हम लोग कब तक एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं? सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, and option D 70%. So according to Income Tax Act 1961, the correct answer is option B 60%. अगर आप टी कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हैं इन इंडिया, तो आपकी जो भी इनकम इस पर्टिकुलर प्रोसेस से हो रही है, दैट इज ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया, तो उसमें से जो इनकम आपकी होती है उसका जो 60% होता है उसे हम लोग एज एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इफ। अब टैक्स कंप्यूटेशन के लिए वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाता है, बट देर आर सम केसेस जब इसको हम इंक्लूड करते हैं टोटल इनकम में। सो ऑप्शन ए, इफ एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स रुपीज 5,000, ऑप्शन बी, इफ एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स रुपीज 10,000, ऑप्शन सी, इफ एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स रुपीज 50,000, and option D, agricultural income exceeds rupees 5,000 and total income exceeds the exemption limit. So वैसे तो your agricultural income is exempted from tax implications under Income Tax Act 1961, but if your agricultural income along with your total income, that means अगर आपका agricultural income 5,000 rupees से exceed कर जाता है, that means you earn more than 5,000 rupees in any financial year through agricultural activities, along with if your income exceeds the exemption limit, and by income we mean the total income, जो 5 heads of income है, अगर उन 5 heads से जो भी आपकी total income बन रही है वो exemption limit से increase कर जाती है, exceed कर जाती है, and along with that your agricultural income exceeds rupees 5,000, जब ये दोनों conditions fulfill होंगी तभी आपकी agricultural income को consider किया जाएगा for taxation under Income Tax Act 1961. So the correct answer is option D. Next question, for the computation of tax. For the computation of tax, agricultural income is included in the total income of. अब computation of tax के लिए यानी tax implications के लिए आपकी agricultural income को किस individual firm, company या local authority की total income में include किया जाता है? Your options are individual, firm, company और local authority, and the answer is an individual. किसी भी individual की total income में ही हम लोग agricultural income को add करेंगे if we are going to imply or charge tax from them. Next, the period of assessment year is, now as stated earlier, the assessment year period is 1st April to 31st March. Next, as per the first basic condition to determine residential status, a person should have been in India during the previous year concerned for option A 60 days or more, option B 120 days or more, option C 182 days or more, and option D 240 days or more. So the correct answer is option C 182 days or more. कोई भी इंडिविजुअल अगर बेसिक कंडीशंस फुलफिल करना चाहता है तो सबसे पहले से 182 डेज इंडिया में स्पेंड करने होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट satisfy at least option A one of the two basic conditions, option B both the additional conditions, option C both basic and additional conditions, and option D none of these. So the correct answer is option C both basic and additional conditions को जब कोई इंडिविजुअल सेटिस्फाई करेगा तभी उसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया का आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है. A person who is of an Indian origin wants to be called a resident must stay in India for at least option A 60 days in previous year,
Option B, 6 days in previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Option C, 182 days in previous year, and option D, 730 days during 7 preceding years in the previous year. So the correct answer is 730 days during 7 years preceding the previous year. So कोई भी इंसान अगर एक रेसिडेंट बनना चाहता है इंडिया का एंड ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही हैज टू स्पेंड एट लीस्ट 730 days in the preceding years of the previous year. यानी previous year से पहले जो 7 previous years हैं उनमें जो भी टाइम उसने इंडिया में स्पेंड किया है वो सब क्यूमुलेटिव 730 days का होना चाहिए. Next, as per the second additional condition, a resident will be an ordinary resident if they stay in India for at least how many days during the 2 previous years preceding the relevant year. So, the question says, as per second additional conditions, a resident will be an ordinary resident if they stay in India for at least how many days during 2 previous years preceding the relevant year. Your options are 182 days, 365 days, 60 days and 730 days. The correct answer is option B, 365 days. Next question. A person is a non-resident if they fail to fulfill option A, the additional conditions, at least one of the basic conditions, both the basic conditions and none of these. So, आपको NRI कमाना चाहता है अगर आप जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते, बोथ ऑफ देम, देन यू आर कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट इंडियन और NRI. Next, in the case of residential status of HUF, firm and association of persons, if control and management are wholly outside India, they are deemed as. अब किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इनका जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो कम्प्लीटली आउटसाइड इंडिया या किसी फॉरेन कंट्री से हो रहा है, तो इनको हम क्या मानेंगे? रेसिडेंट, ऑरिजिनली रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉन रेसिडेंट. इनका सिर्फ बिजनेस यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, बट द मेन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. An Indian company's residential status is that it is always option A, resident, option B, non-resident, option C, originally resident and option D, none of these. तो अगर कोई इंडियन कंपनी है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? नाउ कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना होता है एंड रजिस्टर करना होता है. सो इफ अ कंपनी is opened in India or set up in India, it has to be registered under Indian laws, that is Companies Act. तो Companies Act में जब आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, सब कुछ होता है, then company is an Indian company. और इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा रेसिडेंट ही रहता है. इट इज नेवर एन MNC. It may be an MNC, but it cannot be a non-resident or ordinary resident. It has to be resident because it is completely registered under Indian laws. And the main area of work, the main area of control and management is also in India. Hence, it is always resident. An Indian company's residential status is always resident. Next question. Income received in India is taxable in the hands of. अब जो इनकम इंडिया में रिसीव होती है उसके ऊपर टैक्सेस कौन पे करेगा? सिर्फ रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑरिजिनली रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड ऑल दी एसएससीज. द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दी एसएससीज. कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव की जा रही है बाय एनी ऑफ द रेसिडेंट, एनी पर्सन हैविंग एनी रेसिडेंशियल स्टेटस, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, NRI हो या रेसिडेंट हो, वो इनकम अगर इंडिया में अर्न और रिसीव कर रहा है तो वो इसके ऊपर टैक्सेस पे करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनकम accrued in India is taxable in the hands of non-resident, resident and non-resident, all SSEs, and resident and originally resident. So the correct answer is option C, all SSEs.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ resident and non-ordinary resident, resident and ordinarily resident, non-resident and none of these. So the correct answer is non-resident. कोई भी इनकम जो आउटसाइड इंडिया अर्न की जाती है उस पे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट नहीं लागू किया जाता। इनकम टैक्स एक्ट जो होगा, अगर आपने इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न की है तो इस पे टैक्स सिर्फ नॉन रेजिडेंट पे करेगा, नॉट अदर रेजिडेंट्स। Next, past untaxed income brought to India is taxable in the hands of. अब previous year में इनकम अगर आपने अर्न की है वो अनटैक्सड है तो वो कौन टैक्सेबल किसके अगेंस्ट होगी? सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ऑप्शन बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ऑप्शन सी, सो द वन ऑप्शन दैट इज NRIs, option C is NRI, and option D none of these. So the answer is none of these. Next question, the basic exemption up to which income is not taxable for an individual resident is. यानी वो कौन सी एग्जेम्पशन लिमिट है जिसके ऊपर इनकम टैक्सेबल नहीं मानी जाती फॉर एन इंडिविजुअल रेजिडेंट, वो क्या है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपीज, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 लाख रुपीज। अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए तक है तो आप कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द असेसी शुड कंस्ट्रक्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विद इन option A 1 year before or 2 years after the date of transfer, option B 1 year before or 3 years after the date of transfer, option C within 3 years after the date of transfer, option D within 2 years after the date of transfer. So अगर आप अंडर सेक्शन 54 के एग्जेम्पशंस को क्लेम करना चाहते हैं तो आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कब तक बन जानी चाहिए? सो योर आंसर इज ऑप्शन बी 1 year before or 3 years after the date of transfer. Next, to be an ordinarily resident in India, an individual must satisfy option A both basic and one additional, one basic and both additional conditions, one basic and one additional, and option D both basic conditions and both additional. So the answer is option C, one basic and one additional condition. A company has types of residential status. So company में कितने types of residential status हैं? Option A 2, option B 3, option C 1 and option D 4. Correct answer is option A. There are 2 types of residential status. But Indian companies का एक ही residential status होता है, that is resident. A citizen of India who goes abroad for purpose of employment, he must stay in India in the previous year for at least how many days to become a resident? So the answer is 182 days. 182 days आपको इंडिया में रहना पड़ेगा to become resident in the previous year. The answer is option D. Next question, who is the assessee in case of HUF? HUF के केस में assessee कौन होता है? Options are कर्ता, option B co-partners, option C deemed karta and option D none of these. So HUF means Hindu undivided family. Hindu undivided family का head होता है कर्ता. Okay, so the assessee is option A karta in case of HUF. Next, a citizen of India who goes abroad for purpose of employment. तो ये question भी कई बार repeat हो चुका है. Next question, who among the following may be not ordinarily resident? So this question is also repeated. The correct answer is Hindu undivided family. Next question, income received in India, whether accrued in India or outside India, the tax and its incidence in case of a residence is, यानी कि कोई रेसिडेंट इंडियन है, उसने इनकम इंडिया में अर्न की है या आउटसाइड इंडिया, तो उसके टैक्स इंसिडेंट्स क्या होंगे? सो ऑप्शन ए टैक्सेबल एज पर स्लैब्स, ऑप्शन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ऑप्शन सी पार्शली एग्जेम्प्टेड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टैक्सेबल एज पर स्लैब्स, यानी कंडीशंस के अकॉर्डिंग
जैसे भी टैक्सेस डिसाइड किए गए हैं, टैक्स रेट्स डिसाइड किए गए, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन होगा ऑन बोथ द इनकम्स, वेदर अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. Next question, the income received and accrued outside India from a business controlled or profession set up in India, the tax incidences in case of a resident is. यानी कि कोई इनकम जो बाहर रिसीव या अक्रू हो रही है उस बिजनेस से जो इंडिया में सेटअप है, तो रेसिडेंट्स के लिए उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा. ऑप्शन ए टैक्सेबल, ऑप्शन बी नॉन टैक्सेबल, ऑप्शन सी पार्शली टैक्सेबल एंड ऑप्शन डी none of the above. So the correct answer is option A, taxable. Because the profession is set in India, the person is resident of India. So any income he earns in India or outside. So with this हमारा आज का वीडियो एंड होता है, and in this video we have covered the most important MCQs for Unit 1 of BCom 6th semester income tax. एंड अगर आपको सारे कंटेंट PDF फॉर्म में चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. थैंक यू.